pandas. Basically our pandas library kon hochi, to work with the data sets we are using pandas library. Okay, and the internally pandas library uses numpy. Pandas is a advancement of numpy array. Basically numpy रे हमें जहाँ भी करथिले एटा सिंपली तार एडवांस वर्जन जोथि हमें गोटे कॉलम क्रिएट करूचे कि रो क्रिएट करी कि ता ऊपर हमें एक्स्ट्रा एप्लीकेशन एक्स्ट्रा ऑपरेशन कर पारछे. दैट इज व्हाट वी आर कॉल्ड इज अ pandas. देखियो pandas एटा ट्राई कलर रीड आउट करिया पे. ओके, so pandas is a python library used for the working with data sets. It has the functions for analyzing, cleaning, exploring and manipulating the data. So basically ଆମର जो real time data engineering ର ଦରକାର, ओके, तो ଆମେ डेटा को फास्ट एनालाइज करिबा. डेटा इंजीनियरिंग तम डायरेक्टली हे परिबनी. यू हैव टू नो द डेटा. एक्चुअली तुमको डेटा इंजीनियर रा मेन जिंस होची यू हैव टू नो द डेटा वेल. ओके, so तुमको डेटा फर्स्ट जानिया पड़िबो. डेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. then after that you need to find out like how can you find out the what is the significance of each columns, what are the significance of each rows. Then you can, once you understand the data, then only you can, you know, you can approach some of the methods to clean the data, or you can explore the data, or you can manipulate the data. Okay, until you know the exact significance of each column or data types or information related to data, you cannot take all these actions. So ସେଥିପାଇଁ data को जानना very very important. Okay, so that is the first thing. Don't think like ଆମେ data engineering पढुछु माने ଆମେ data analysis करिबुनी. Then how will you know that कि data engineer कोन करे अछि? Until you do, that's a part of that. Data engineering of the part होची data analysis. So that is bound. You have to explore that. You have to know the data. Then only you can think of it like which data, which logic I need to apply. ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡେଟାର ୟୁନିକ୍ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଦେଖିବନି, କୋଉଟା maximum minimum value ଦେଖିବନି, then how will you identify कि मते कोउ method टा implement କରିବାର ଅଛି. So you cannot decide, right? So for that purpose you need to analyze the data first, you need to explore the data first, then you can take decision, then you can implement the data engineering methods. Okay, like તમે case statement apply କରୁଛ कि filter condition apply କରୁଛ कि ତମର like join condition कि ଆମର aggregation କରୁଛ कि pivoting କରୁଛ, anything. So you need some information, actual information, then only you can implement that data engineering task. Okay, ठीक अछि. Then pandas, what you can do is pandas is basically you can clean the data. So in the real time you will be getting very very bad records. So you can say, you cannot imagine like how many bad records you can get. So any kind of bad record you can get, but you should know that how to implement that, how to clean that data, right? So make them readable and relevant. And relevant data is very very important in data science basically. So relevant data means what? Completely clean data. So basically why data engineering people are needed for data science. Basically ଆମର कोन order downstream table ଆମର use होछ, whatever ଆମେ जहाँ भी clean table generate करिबा, that is being used by the data science team. So basically data science team always need a clean data. Okay, without clean data they cannot implement, they cannot build their models. So basically ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର हम. Okay, so in the layman language you can understand what is pandas. Pandas is basically a library where we can work with the data sets. Okay, work with the data sets, and you can clean the data, manipulate the data, and you can perform all the data engineering tasks on the full data. Okay, so that is what pandas is used. So बुझियला pandas ର main purpose कौन, why we are using pandas. yes sir, but bad data ମାନେ କଣ sir? Bad data ମାନେ କେମିତି ଚଳିବ? bad data माने होची माने सपोज तमरो डेटा रो फॉर्मेटिंग टा, सपोज तमरो डेटा टा अछि तमरो इंटीजर रे, ता भितर तमे गोटे किछि गोटे स्ट्रिंग डेटा टा पळे आछि. ओके, तमरो एज अछि 25 30 50 जहाँ भी हला, ता भितर तमे एबीसीसी केमते टा पळे आसीबो कि गोटे बाय डिफॉल्ट गोटे 999 के माने डेटा रिकॉर्ड कर देबो कि तमरो आउटलायर डेटा केमते हे गला. एज जने पुट कर देछि 200, तो एज केबे तो 200 हे परिबो ना. दैट वी कैन से दैट दीज आर द बैड रिकॉर्ड्स, जोटा कि हमको आइडेंटिफाई करिया पड़िबो, हमको एनालाइज करिया पड़ो, देन वी हैव टू क्लीन द डेटा. ओके, बिकॉज रियल टाइम डेटा जोटा तुम पाउछ, तुम रियल डाटा माने को तुम सब फेसबुक यूज करछ कि किछि भी यूज करछ, ता धर तुम डेटाटा फेच करछ कि गोटे डिटेल्स गुडा गोटे यूजर डिटेल्स हो कि मल्टीपल यूजर डिटेल्स हो, ସେଥିରେ बेस्ड ऑन तुम जो कमेंट यूज करछ कि किछि भी कमेंट से सब फेच करछ, डेफिनेटली तुम बहुत सारा बैड रिकॉर्ड्स मिलछि. बट हमको ताको कोन करय अछि, हमको एनालाइज करी कि ताको हमको फिल्टर आउट करय अछि.
नंबर्स भी हो तमे नंबर्स किछि भी आइडेंटिफाई करूछ ना माने सोशल मीडिया डाटा हो कि हमर एपीआई डाटा हो किछि भी डाटा हो व्हाट एवर डाटा वी आर फीचिंग सेटा केबे तमर रियल टाइम डाटाटा केबे तमर क्लीन डाटा नथिबो तमर जहाले गोटे माने एज टा कोन एज टा सब नंबर हवा दरकार यदि हम स्ट्रिंग पाइबा वी कैन से दैट दैट्स अ बैड रिकॉर्ड ओके यदि हमें कहबे स्ट्रिंग डाटा नैचे बट सेथिरे हमर कोन रहइबो ना माने बहुत सारा स्पेस रहइबो तो इन दैट केस आल्सो वी कैन से दैट दैट्स अ बैड रिकॉर्ड ओके तो ସେଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଡ୍ ରେକର୍ଡ ଗୁଡାକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏତେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେଲି ଆଠୁ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଡ୍ ରେକର୍ଡସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ତାକୁ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ତମେ ଇଚ୍ ଡେଟା କେମିତି ଜାଣିବ ମାନେ ସପୋଜ ଆମର ମିଲିୟନ ରେକର୍ଡସ ଅଛି ତମର କୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଟା ବ୍ୟାଡ୍ ରେକର୍ଡ କୋଉ କୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଗୁଡାକ ଅଛି ତମକୁ ସେଇଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଅର ଏଲ୍ସ ମାନେ ସେଠି ତମ ନିଜ ଡେଟା ଡେଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ର ଆନାଲିଟିକ୍ସ ହଉ କି ତମର ଟିକେ କଣ ଦିମାଗ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ହାଉ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦୋଜ ରେକର୍ଡସ तो से केसेस रे तमे केमिति करो यू हैव टू यूज योर ब्रेन एंड यू हैव टू डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन सो दैट यू कैन फाइंड आउट कि को वैल्यूज गुडा को मते बैड रिकॉर्ड्स अछि आई हैव टू फाइंड आउट ओके तो सेटा होची बैड रिकॉर्ड्स कहबा हमें क्लीन माने हमर सब किछि बेस्ड ऑन द डाटा टाइप्स जहाँ भी अछि हमर क्लीन रिकॉर्ड सेटा अछि ओके डाटा टाइप हमर इंटीजर अछि इंटीजर डाटा डाटा हमर डेट अछि डेट डाटा डाटा में स्ट्रिंग अछि स्ट्रिंग डाटा सो बट आमर जदि ट्रू फॉल्स अछि बुलियन डाटा अछि आमे तो ट्रू फॉल्स अछि बट ता भितर जदि डाटा टाइप मिसमैच अछि देन वी कैन से दैट्स अ बैड रिकॉर्ड ठीक अछि ଏବେ ବୁଝିହେଲା ନଲ୍ ରେକର୍ଡ ହଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ ବି ଯଦି ଆମର ଡାଟାରେ ବହୁତ ସାରା ନଲ୍ ରେକର୍ଡ दैट इज आल्सो बैड रिकॉर्ड यू हैव टू हैंडल दैट ओके सर सो बैड रिकॉर्ड मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड डाटा रो आसे सर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा नो रो नो 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 से ना स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्ड डाटा रो भी आसे हाँ पाइबो आसे स्ट्रक्चर डाटा आसे आमे देखुचे रियल टाइम रे आमे देखुचे तळे क्वेरी तमे करूचे एसक्यूएल क्वेरी करूचे टेबल ऊपर वी आर ऑलवेज सीइंग दैट हमर डाटाटा क्लीन अछि ओके बट जेतବେଳେ ତମେ फाइल डाटाटा आनिबो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा तो आसे ही आसे दैट इज नो डाउट बट सेमी स्ट्रक्चर डाटा हो स्ट्रक्चर डाटा हो तदरे भी आसे हमर डाटा ओके तो हमको सेटा क्लीन कर देखो हमर तो एमती नाही कि सब गुडा हम टेबल फॉर्मेट रे डाटा टेबल फॉर्मेट डाटा कोन रियल टाइम डाटा हमर टेबल फॉर्मेट डाटा कोन आसीबो कि डेफिनेटली से गोटे फाइल थ्रू रे आसीबो आमे ताको फाइल थ्रू रू आमे गोटे टेबल को माने रिवर्ट କରିବାକୁ पड़िबो कि सेव କରିବାକୁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ पड़िबो सो टेबल डाटा कोन फाइल डाटा गुडा डेफिनेटली से तो हमर बहुत सारा बैड रिकॉर्ड्स थिबो ना रियल टाइम डाटा हमर फाइल फॉर्मेट रे आसे आमे जो टेबल कथा कहूचे से टेबल टा कोन फॉर्मेटिंग करिकि गोटे ये रु आनसी कि आमे एक्सट्रैक्ट करिकि टेबल रे इंसर्ट करू इट्स नॉट कि डायरेक्टली हमर डाटा टेबल को पळे आसे सेमती तो नाही ना जोठी भी तमे आनो डाटाटा तुम डायरेक्टली केबे टेबल रे कोन थिबो तुम टेबल रे तुमको इंसर्ट କରିବାକୁ पड़िबो कोठु डाटा आनिकी ओके डाटाबेस को कनेक्ट କରିବାକୁ पड़िबो देन तुमको एडा आनिया पड़िबो तो डेफिनेटली से डाटा गुडा को डेफिनेटली तुमरो कोन बैड रिकॉर्ड मिलिबो ही मिलिबो रियल टाइम डाटाटा तुम केबे एक्सपेक्ट करिवोनी कि तुमर सब जगह क्लीन अछि यू विल बी गेटिंग बैड रिकॉर्ड्स तो बेसिक बैड रिकॉर्ड गुडा को हैंडल करिया पे वी नीड टू यूज दिस पांडास गॉट इट सर ओके तो यू शुड ऑलवेज बी थिंकिंग लाइक हमें केमिति एटा इंप्लीमेंट करबा कोन करबा यू शुड ऑलवेज थिंक ओके ठीक अच्छे देन दिस इज फाइन आउ कार डाउट्स अच्छी ସାର୍ ପାଣ୍ଡାସଟା କେବଳ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡାଟା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହଉଛି ସାର୍ स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर सॉरी स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर पे हम इसको ମାନେ ଟେବୁଲାର ଫର୍ମ ଥିଲେ ତା ସହିତ ଆମେ ଅପରେସନ କରିପାରିବା ସାର୍ ପାଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା हाँ हाँ ଏମିତି हाँ करेक्ट करेक्ट ଠିକ ଅଛି स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भीतर डिफरेंस कौन जानछ कि नहीं सॉरी स्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड तो तुम जानिछ तार किछि नाही माने जेमति सोशल मीडिया डेटा हे गला पीडीएफ डेटा एटा सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बट स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा भीतर डाटा डिफरेंस कौन जानछ ना किए जानिछ कि को माने दैट्स फाइन आई विल एक्सप्लेन बट किए जानिछ कि एग्जांपल कोड डाटा में स्ट्रक्चर डाटा कहबा कोड डाटा अनस्ट्रक्चर डाटा कोड डाटा सेमी स्ट्रक्चर डाटा कहबा तो जो रोस एंड कॉलम से रोज सेटा स्ट्रक्चरल बोध जस्ट अ सेकंड
ओके फाइन सो हाँ ମୁଁ କଣ ପଚାରୁଥିଲି ଲାଇକ୍ structured and semi structured data ଭିତରେ difference right yes sir ହଁ structured data ହଉଛି କଣ ନା ଦେଖ structured data ମାନେ କଣ ତମର ସବୁବେଳେ input ଟା ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିବ ତ ତମର properly row column ଏଗୁଡା ସବୁ maintain ହେଇକି ରହୁଥିବ right that is called structured data ओके बट सेमी स्ट्रक्चर डाटा कौन होची ना तमर देखो जेसन डाटा हो गला पीडीएफ डाटा रह गला सॉरी पीडीएफ नहीं जेसन हे गला सीएसवी हे गला एटा सब तमर सेमी स्ट्रक्चर डाटा काहेकि ना तुमको सेटा देखा जाउची इट लुक्स लाइक टेबुलर डाटा बट तार किछि मेटा डाटा इंफॉर्मेशन नाही माने कॉलम रो डाटा टाइप्स हो कि साइज हो ये सब इंफॉर्मेशन नाही जोटा कि हमरो एसक्यूएल टेबल गुडा करे अछि टेबल रे तमरो गोटे सेपरेट मेटा डाटा रहउची कि तमरो ईच कॉलम रो डाटा टाइप्स कोन रहउची तार स्टैटिस्टिक्स रहला कि डाटा साइज ए सब जिंस डाटा अबाउट द डाटा मेटा डाटा कहबा हमें तो से इन्फॉर्मेशन टा हमरो स्ट्रक्चर डाटा रहउची टेबल रे बट से इन्फॉर्मेशन हमरो फाइल्स रे होउनी जोटा कि हमरो जेंति कहली जेसन फाइल्स हो कि हमरो CSV file. These all are the we can say semi-structured data, but because there is no metadata available for that. Okay. So unstructured ଯେମିତି data ରହିଗଲା ଏଟା ତାର କିଛି ବି ନାହିଁ ମାନେ ଆମର structure ହିଁ ନାହିଁ name column ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ okay it's a randomly it is moving here and you have to find out the exact data so basically PDF format data हो ଏଟା ସବୁ କଣ ଆମର randomly data ରହୁଛି ନା it's not a proper formatted data so that is we can say that unstructured data okay so you need to understand what is the structure and semi structure unstructured structured data होची हमरो tables जोटा कि SQL टेबल डेटाबेस जोटा हैला सेटा होची प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड टेबल बिकॉज़ सेटा कोन एतरा हम मेटाडाटा को मैनेज करछु वी आर मैनेजिंग द मेटाडाटा ओके लाइक हमर कॉलम डेटास रहउची रोज डेटास रहउची देन हमर इंफॉर्मेशंस अबाउट द कॉलम all these informations are available but in case of semi structured data we do not have that metadata we are simply reading the data and exploring it so basically ସେ ଜିନିଷରେ ଆମର କଣ ସେଟା ଆମର କିଛି ମେଟାଡାଟା ଇନଫର୍ମେସନ ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ରହୁନି that is called semi structure unstructured ମାନେ there is no column no row nothing index ଆଉ column ର maintenance ହିଁ ନାହିଁ ସେ data ରେ that's why it is called unstructured okay ବୁଝିଗଲା ଏଟା yes sir yes sir got it okay सर କିଏ ଜଣେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଥିଲେ ହଁ one sir ଆମେ ଡିକ୍ସନାରୀ କୁ ସେମି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କହିପାରିବା ମାନେ ପାଇଥନ ରେ no no that is dictionary data type ଆମର ହେଇଗଲା ସେଟା ଆମେ ଗୋଟେ JSON like structure ଆମକୁ ଦଉଛି but data ଗୋଟେ ଆମର data type ହେଇଗଲା dictionary is not a ମାନେ ଆମ data set ନୁହେଁ ଯଦି dictionary JSON file କୁ କହିବା ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଦେଖ ଫାଇଲ ଲେଭେଲ ଡାଟା ହଉଛି ଆମେ ରେଡ୍ କରୁଛୁ ତ ସେଇଟା ଆମେ କହିବା ସେମି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡାଟା ବଟ୍ JSON ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡାଟା ଟାଇପ ରହୁଛି ନା that we cannot say it's a kind of structured data unstructured data okay JSON we can say that it's ଆମେ डिक्शनरी को JSON ରେ कन्वर्ट कर दवा then ताकू कहबा it's a semi structured data yes that is correct but dictionary is a data type जोटा कि हम गोटे डाटा स्टोर करछु okay that's not a data set okay ଆଉ କାହାର ଥିଲା डाउट्स हाँ सर ମୁଁ କହୁଥିଲି ସାର୍ ଆମେ ତ ଯେତେବେଳେ ଡାଟା ଇନସର୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥାଏ ନା ସାର୍ କଲମ ଯାକ ଉପରେ ତ ବେଡ୍ ଡାଟା କେମିତି ଇନସର୍ଟ ହୁଏ ସାର୍ मेन डाटा ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ବେଡ୍ ଡାଟା କେମିତି ଇନସର୍ଟ ହୁଏ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ମିନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଭିତରେ ନମ୍ବର ପଳା ଆସେ ନମ୍ବର ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ପଳା ଆସେ ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥାଏ ନା ସାର୍ ତ कांस्टेंट तमे अप्लाई करथा ना टेबल रे तमे जे से जो टेबल रे अप्लाई करछो तमे ही अप्लाई करछो कांस्टेंट तमे निजे मैनेज करछो कांस्टेंट माने कोन तमे तबला रियल टाइम डाटा उठौछो डाटा कोड उठेबो तमे एपीआई रू उठेबो कि गोटे साइट रू कोड से उठेबो ना तो सेठी तमे कोन तमे कांस्टेंट ता तमे टेबल रे अप्लाई करछो जे तमे इंसर्ट करिया पई कि तमे एटा हल्ला कांस्टेंट एटा ही परिबोनी दैट थिंग ओके बट सब केस सेटा ही नथिबो ना कांस्टेंट जदी सब केस देखो कांस्टेंट अप्लाई करला कि हां इट कैन नॉट बी नल इट कैन नॉट बी लाइक दैट ओके बट आमे जदी कांस्टेंट सेठी अप्लाई कर देले कि हमर नल हेई परिबनी दैट मींस कोन सेटा इंसर्शन फेल हे जिवो राइट कि सेटा इंसर्ट हबनी बट आइडियली वी नीड द अदर इंफॉर्मेशन देखो प्रॉब्लम कोन होचे कि तमे सपोज कहबो कि हमर गोटे कॉलम टा नल न होइथिबा दरकार कांस्टेंट माने गोटे कॉलम टा प्राइमरी की टा नल हे नथिबो कि कोन दरकार राइट बट ता सेटा कोन डेफिनेटली कांस्टेंट अप्लाई कर सेटा इंसर्ट ही हबनी ना राइट से केसेस रे इंसर्ट ही हबनी तो से केसेस रे कोन होची ना हमर ଆମେ ଗୋଟେ ଡେଟା ଲୁଜ କରିଗଲେ ସେଟା ତ ଇନସର୍ଟ ହବନି ଅଦର ଇନଫର ଆମର ସିନା ଗୋଟେ କଲମ ର ଭ୍ୟାଲୁ ନଲ୍ ହେଇଗଲା ହ୍ୱାଟ अबाउट ଅଦର କଲମ ଭ୍ୟାଲୁ ତ ରହିଲା ଡେଟା ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟା वी शुड नॉट लूज द डेटा
आमे तो कहबे कि आमे डेटा लूज करबा नो सब हम डेटा लूज करे डेटा हमर वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो सेति पय ऑलवेज ट्राई कर ताको हैंड अलगा वे रे हैंडल करिया कांस्टेंट अप्लाई करे दैट इज फाइन आमे एटा हे परिबन एटा सेमते हे परिबन दैट इज फाइन बट द थिंग इज आमे रियल टाइम डेटा चल पाइबा तो डेफिनेटली हमर बहुत सारा डेटा थिबो बहुत सारा बैड रिकॉर्ड्स थिबो तापर आमे को रियल टाइम डेटा को वन बाय वन इंसर्ट करिकि आमे टेबल रे अप्लाई करूछु ओके जोटा कि आमे कोन एसक्यूएल फॉर द एसक्यूएल रे आमे टेबल ऊपर काम करछु दैट्स वी आर गेटिंग ऑल द स्ट्रक्चर डेटा एंड एवरीथिंग बट मोस्टली रियल टाइम रे सबले स्ट्रक्चर डेटा पाइबन ना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट स्ट्रक्चर डेटा तो सेति पे आमे तो बिकॉज़ सेति पे तो आमे एठी डेटाबेस रे आ पाइस्पार्क रे काम करछु टू वर्क विथ द सेमी स्ट्रक्चर डेटा कि आमे केमिति हैंडल करि परिया केमिति बेस जिंसोडा हैंडल करिया बिकॉज़ स्ट्रक्चर डेटा वन टेबल सबले टेबल को कनेक्ट करिकि सब करिया पड़िबो ठीक अछि ओके सर सेटा होची प्रॉब्लम बहुत सारा अछि आमे कोन आइडियली आमे कोन करछ आमे एते बेले काम करूचे आमे कोन देखबल देखुचे कि हमर डेटा टाइम ती अछि क्लीन अछि कॉलम अछि सब किछ अछि बट एते रियल टाइम रे डेटाटा आसीबो ओके गोटे सीएसवी फाइल डेटा हो जेसन फाइल हो अब्रो फाइल हो डेटा गुडा माने से डेटा गुडा कंप्लीटली हमर कोन पूरा माने अनक्लीन फॉर्मेट रे थिबो यू कैन नॉट से इट्स अ क्लीन्ड वन सो यू नीड टू फाइंड आउट ओके नेक्स्ट ओके एटा लास्ट डिस्कस करके हमें क्लास एंड करिबा सो पांडास वर्सेस एसक्यूएल कोन हमर डिफरेंसेस होउची बिकॉज़ पांडास रे हमें कोन करछु एसक्यूएल रे हमर कॉलम रहउची टेबल रहउची सेम स्ट्रक्चर रहउची पांडास रे भी सेम जिंस रहउची देन व्हाई शुड वी यूज pandas rather than you can use the SQL first thing is pandas is free okay so basically it's a open source you can use it directly गोटा python install करके तमे तदरे pandas you can library install करि परबे you can use it but SQL पय तम कोन गोटा सर्वर दरकार किछि गोटा दरकार ओके रियल टाइम रे काम करिया पे रियल टाइम रे एमिते VS कोड रे हमें pandas यूज करि परबे इट्स फ्री but SQL करिया पे इट्स दरकार हमरो किछि सर्वर दैट इज फाइन but whenever you are it's coming to data जेतले हमें प्रोसेस करिया को ट्राई करबा तो से केस रे pandas हमर कोन करछ ना किछि किछि एक्स्ट्रा फंक्शनालिटी दोछि जेमिति हमर हेगला ग्राफ गोटे क्रिएट करबा प्लॉटिंग करबा प्लॉट ओके गोटे डेटा रो गोटे अछि हमर डेटा को हम विजुअली गोटे रिप्रेजेंट करबा दैट इज पॉसिबल इन pandas एंड pandas रे बहुत सारा फंक्शनालिटी अछि ओटा कि एसक्यूएल रे नै एसक्यूएल रे हमें करि परिबा से माने सिलेक्ट कर रन करिकि हमें बहुत सारा फंक्शनालिटी करिपा दैट्स फाइन बट pandas रे हमें कोन बहुत सारा कोन यूजर फ्रेंडली सेटा एंड बहुत सारा जेंति फंक्शनालिटी अछि बहुत सारा इनबिल्ट मेथड्स अछि जो द्वारा कि हमें इजीली गोटे डेटा एनालिसिस एक्टिविटी टा इजीली हमें माने कोन इंप्लीमेंट करि परिबा बट जोता कि एसक्यूएल रे हमर टफ होबो मल्टीपल टेबल्स ऊपर जले काम करिबा तो डेफिनेटली हम कोन हमें डेटा फ्रेम रे कोन करछे गोटे डेटा को स्टोर करछे गोटे वेरिएबल देन ताको यूज करछे तो दैट कैन बी डन बट एसक्यूएल रे कोन होचे हमें सेटा करि परिबानी गोटे वेरिएबल स्टोर करिया पे वी कैन नॉट डू दोस थिंग्स इन एसक्यूएल राइट हमको कौन करिया पड़ो पीएल एसक्यूएल सब बहुत सारा कॉम्प्लेक्स जिंस यूज कर परियो करिया को पड़िबो जोटा कि pandas रे में बहुत इजीली पूरा कर परिबा so that's why we are using pandas over SQL but एमती नहीं कि pandas सबले एडवांटेज ओवर SQL तो बिग डेटा प्रोसेसिंग हबो SQL is faster compared to pandas okay so that is the main advantages of SQL like तो big data processing होउची SQL is faster and pandas is like there is some limitation of working जेमती हमें कहबा कि till 1 GB of data processing pandas is good if it is more than that then pandas will fail like it will not work efficiently so सेटा होची डिफरेंस अछि एंड कोन रहिला तापरे per hand okay SQL is pandas working small data set yeah aggregation when it comes to speed ha speed also like in case of speed जेमती कहली माने डेटा साइज ऊपर जो अधिका मोर माने बिग डेटा अछि in that case if it is more than 1 GB 2 GB then in that case we can say SQL is faster compared to pandas data filtering ho कि हम data handling all these things रे pandas is SQL is faster but यदि हमर less data अछि but very complex logics अछि we have to implement small data set but complex logics अछि implement करिया पे then pandas has the upper hand you should choose pandas over SQL in those cases okay so हमें डिटेल से पढ़िबा काली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन pandas and SQL and where to use pandas and where to use SQL बेसिकली हम ऑलरेडी डिस्कस कर दैछि बट स्टिल आई विल डिस्कस टुमारो ओके बुझियला एटा pandas SQL किछि किछि बुझियला कल तो मु डिस्कस करबी बट फॉर नाउ यू कैन सिंपली एक्सप्लेन अंडरस्टैंड ओके
ठीक अच्छे Yes, sir. हाँ सर ओके